I am Kinshuk. Welcome to my channel Learn with Kinshuk. So today we will learn facts on Republic Day. So first of all, Happy Republic Day to all. So today we will learn facts on Republic Day. Okay, facts. Now what do you mean by facts? Facts means some information about Republic Day, like why we are celebrating this Republic Day on 26th January, how it is named Republic Day, that's all, and the history of Republic Day. Okay, and that's all. Okay, so let's start the video. Okay, so as you all know, today we are proudly celebrating 73rd Republic Day. Okay, today on 26th January 2022, we are celebrating 73rd Republic Day. Okay, so in today's presentation, let's learn some facts about Republic Day. We will discussing right from the history of celebrating the Republic Day. First of all, we will discuss the history. Okay, history, and as and this is the Constitution of India. Okay, so let's start the. Okay, now why do we celebrate Republic Day on 26th January? Okay, so now we will discuss the history of Republic Day. Okay. In December 1928, INC, Indian National Congress, passed a resolution demanding dominion status, gave the British government 1 year's time. Okay, so डोमिनियन स्टेटस इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश कंपनी से मतलब ब्रिटिश कंपनी से डोमिनियन स्टेटस मांगा था। मतलब ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट थी वो जवाहरलाल नेहरू और उनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस चलाना चाहते थे, पर ब्रिटिश व्हेन ठीक है, तो इस लाइन का मतलब ये है। सो आगे देखते हैं। व्हेन ब्रिटिश गवर्नमेंट डिनाइड मीन्स मना कर दिया, denied the dominion status, Congress decided to get full independence. जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मना कर दिया डोमिनियन स्टेटस करने से, तो कांग्रेस ने डिसाइड कर दिया था कि उनको फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, मतलब पूरी आज़ादी चाहिए। ओके, सो 2 जनवरी 1930, उसके 2 साल बाद कांग्रेस वर्किंग अ कमिटी decided the last Sunday of January 1930 to be celebrated as Purna Swaraj Day. Purna Swaraj Day. Okay. Last Sunday of January. Purna Swaraj Day. Which incidentally fell on the 26th January. तो जो लास्ट संडे था, ओके, लास्ट संडे था, वो इंसिडेंटली 26 जनवरी को ही आया, तो इसलिए हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, सो एज वी ऑल नो 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड। हाँ, बहुत लोग ये भी कंफ्यूज होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन तो 26 नवंबर 1949 को बना था, पर फिर उसके 2 महीने बाद क्यों बनाते हैं? तो 26 जनवरी 1958 कमेंस्ड, मतलब वो पूरा बन गया था और रेडी हो गया था, तो इसलिए। ओके ओके, so this is the picture of Constitution of India, cover page. Okay, so let's move to the next topic. Okay, know the difference in flag hosting on 26 January and 15 August. Okay, so now we will know the learn the difference in flag hosting, मतलब फ्लैग को किस स्टाइल से होस्ट किया जाता है 26 जनवरी को और 15 अगस्त को, और किस द्वारा, मतलब कौन
26 जनवरी को कौन होस्ट करता है और 15 अगस्त को कौन होस्ट करता है? So we host the flag. Host. This is the correct spelling of we are saying host, but it actual spelling is you are thinking by saying pronouncing this word like this, but the actual spelling is hoist like this. Okay, so remember that we hoist the we hoist the flag year every year on August 15 and January 26. But there is some difference between the flag hosting on both August 15 and January 26. Okay, let's know. First point, on the 15 August Independence Day, the flag is pulled from the bottom by a rope when then hoisted, which is called flag hoisting, because as you all know that on the 15 August 1947, our the day our country got independent, मतलब इस दिन को हमारा देश आज़ाद हुआ था ब्रिटिश से. So this the British flag was then lowered and the Indian flag was hoisted up. So suppose this is the stand. Okay, this is the stand and this is the flag of British. Okay, okay, like this. Okay, so here is a rope. Okay, and it it is pulled up, pulled down. That flag will come down, and then our flag has hosted like this. Okay, like this. Okay, there is a rope. So like this, um, like this. In 1947, 15 August, the Indian flag was hoisted up. Okay, okay. So now we will discuss on Republic Day, January, the flag remaining tied up. मतलब वो पहले से ही बंधा हुआ रहता है ऐसे. ठीक है, ऐसे बंधा हुआ रहता है. Which is hosted in the Constitution. It is called play unfurling. मीन्स वो ऐसे बंधा हुआ रहता है पर उसको एक कपड़े से ढका जाता है और कोई फूल इसमें भर जाते हैं. ठीक है, और नीचे से रोप जब खींचते हैं तो ये कपड़ा ओपन हो जाता है और फिर ये फ्लैग लहराने लगता है. सो ये होता है प्रोसेस जनवरी 26 में. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्ले अनफर्लिंग. ओके, so on the Independence Day, flag hosting done from Red Fort, Lal Killa, okay, in Delhi. Okay, this hand and the Prime Minister addresses the Prime Minister को host करता है. Okay, and on the Republic Day, flag is hosted in Rajpath. This is also in the Delhi, and President addresses this nation. Okay, so this is the picture of Ramnath Kovind ji, and this is the picture of uh, Mr. Narendra Modi ji. Okay, now we will discuss preamble of India. Means when constitution has made, then um, the preamble also was made. Okay, preamble and the constitution of India. So this is the preamble of India. Okay, so I am reading this. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular and democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic, and politically, liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship,
equality of status, opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity, integrity of the nation. In our Constituent Assembly, the 26th day of November 49. See, in the preamble, there is also written November, 26th day of November in 1949. So most of the people confuse. So hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. मतलब क्या हुआ था, मैं वापस से बता देता हूँ. 26 डे ऑफ नवंबर मतलब 26 नवंबर 1949 को वो बन गया था, पूरा बन के रेडी हो गया था, पर उनको कमेंस्ड, उसको कमेंस्ड कब किया, 2 महीने बाद, 26 जनवरी को. ओके, क्योंकि जब तब पूर्ण स्वराज्य डे भी सेलिब्रेट हुआ था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी सोचा कि इसको भी 26 जैन में ही सेलिब्रेट करेंगे हम, क्योंकि जब हमारा पूर्ण स्वराज्य डे भी हुआ था सेलिब्रेट. सो यही थे फैक्ट्स अबाउट रिपब्लिक डे. ओके, सो please like, share and subscribe this video.